Four friends, 19,024 feet altitude, and we got completely lost in the mountains. And one wife went to Umlingla Pass alone searching for her husband. This all is day 11, and you have never seen a cycling disaster like this. Hey all, welcome back, and let me tell you what happened on day 11 of our Manali to Umlingla Pass journey. We were in Hanle village, the same Hanle which is famous for star watching. We were four friends now. We planned to go to Umlingla Pass at a height of 19,024 feet above the sea level, that is higher than the planes fly. Our plan was to cycle from Hanle to Umlingla Pass and come back on the same day, and it is at 140 kilometers total. I know you are thinking these guys are completely mad. Maybe we are, but that's what makes life fun, right? The morning story. So the story starts at 4 a.m. Temperature was 7 degree in Halle. It was colder than my fridge at home. We all wake up without any problem. We packed our bicycles. We had simple breakfast with the butter, bread and tea. This is the only thing which could be available at early time of the day. We promised that we will return by evening. It was 5:50 a.m. when we started. We got beautiful sunrise on the mountain tops. Four excited friends ready to do the impossible. Hanle morning magic. Something beautiful happened here. आगे ब्रेकर है ध्यान देना Yoga class. योगा करने जा रहे हैं सुबह बच्चे Yoga class. Wow. Great. Hello. Hello. और हमारे बच्चे We saw local kids going to early morning yoga classes. Can you believe this? Most people are still sleeping, but these mountain children, they are doing yoga with nature. This is the real India. Now let me save you from the confusion which we faced. You will see small arrows with the homestay names written on them. That's your correct path. This is the same road on which the government hospital is situated. Just remember this. This is the landmark. ये गाड़ी वाले को रोकना. निर्गुणा होके जो पिछले रास्ता जाता है उमलिंगला तो उधर से जाएगा वो कच्चा रास्ता आगे कितना दूर जाना है? कहाँ पे सर नुरबुला टॉप के लिए सीधा जाना है. 25 किलोमीटर हाँ, और आगे ये सीधा रास्ता है, कहीं नहीं मुड़ना. कहीं नहीं मुड़ना है. बहुत बढ़िया जी, थैंक यू. डिड यू हियर व्हाट दैट पर्सन सेड? Nurbula top is 25 kilometers from here. So just remember it. It will become very important later. We have left Hanle city behind. Going on this road. Could be a landmark. The whole hotel and restaurant. Observatory will be on your right. The first challenge. The next problem which we faced, the road was under construction. Oh my god. ऐसा लग रहा है हिल के मेरे हाथ सून हो जाएंगे थोड़ी देर में. नटबोल्ट हिले हो गए. आवाज आने लगी साइकिल से. ओह माय गॉड. खिलाज के रख दिया इसने इतनी जल्दी. There were big stones everywhere, but we didn't give up. We were strong cyclists, right? फ्रॉम दिस वे हाँ, कच्चा रास्ता पकड़ते हैं. ये ज़्यादा बेटर है यार बजाय इसके ट्रक भी वहीं से आ रहा है बेटर है. लेट्स डू इट. क्या मस्त आवाज आ रही है कैरियर से. बर्तन खड़कने की आवाज कर रहा है. We arrived to this location and it has many options for stay. Lots of homestays and all you can see. Maybe if not Hanle, you can come and plan a stay here. The way they have restriction for camping there, they will not have it here as well. Maybe this place, the known as the Hor Cottage Hanle, can be a landmark for you. And riding on this bicycle is going to be a pain in your shoulder. Hope when you come it will be ready. Otherwise see the kind of noise my bicycle is making. Very painful to ride here, especially with one hand. So I can see a mobile tower here. So you need to keep going on this road, and then there's a bridge which we will cross now. Soon we reached near a BSNL tower.
So if you have a BSNL mobile connection with you, it's a BSNL tower here. So maybe it will be covering all this area. One local person helped us. He said, ये जो टावर लगा हुआ है, हाँ, ये जो पहाड़ी है ना, हाँ, उस पार से रास्ता है जाना। वो जो आपका पीछे कैंप है जो, हाँ, उसके बाजू में घूमेगा, वहाँ से लेफ्ट जाएगा। आर्मी कैंप दिख रहा है, आर्मी कैंप, हाँ, हाँ, आर्मी कैंप। So he's saying, take this route. There is an army camp. From there we need to climb up. So mountains are starting from here. After this BSNL tower, you need to take the right turn. It is 11 kilometers which we have covered till now. That is the army camp over there. Late to army camp, road was mostly flat. This was good news before real problems started. This was the army camp where from we have taken this turn. So रास्ते देखो कहाँ से लेके जा रहा है आपको. All desert. हाँ, ये तो शानदार लग रहा है अभी तक. लग रहा है चंबल की घाटी से गुजर रहे हैं. Time is 7:20. Almost 10 minutes of climb. Here the views were absolutely amazing. Morning weather was perfect. I had great friends with me. Everything felt like a dream. Let's see how many kilometers we have covered. संदीप भाई कितने किलोमीटर हो गया? 14. अच्छा, ये 4 किलोमीटर तो पता भी नहीं चला ना. 11 के बाद 3 पता लगा नहीं. आदत तो बढ़िया था. गर्मी होने की हाँ, पता ही नहीं लग रहा. तो चला कुछ है इसमें तो. Let me tell you about the distance. So total was 25 kilometer. We covered 14 already. Only 13 more to Nurbula top. While riding here, we were feeling very confident. Amazing discoveries. Something magical happened here. We found 3 incredible things. A wild donkey walking around in Himalayas. They were the flying insects. They kept hitting our eyes. मच्छर बहुत है यार, आँखों में घुस रहे हैं. Shit man. भाई रुकना नहीं है यहाँ पे. Like they wanted to commit a suicide there. This raw path and the cyclist. Isn't it amazing? A black stone, something was written on it. For this milestone written Jursar, Jursar. And what is Jursar? No clue except this valley formed by these mountains. It was 8:15 a.m. when I realized something strange. See, kind of a route we are taking to reach Nurbula Pass. We had not seen anyone on this route. लोग चलो मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ. यही तो रिकॉर्ड करना है. क्या है, फ्रेश हो ना? वेट वाइप्स. प्रेशर बन गया यार. लाइट करो. हैं? इसलिए बोल रहा था ब्रेकफास्ट लाइट करो. यार 8 ब्रेड कुछ भी नहीं होता है. 12 खाई थी, 4 तो रिड्यूस कर दिया आपने. ऐसे ही आपने 4 बढ़ा दी. बंदा सॉलिड खा के चले, आगे मिले ना मिले. यूट्यूबर ने की मिलना के रास्ते में पहुंची. नहीं सर तुम्हारी बातें सुन के ना वही भाग गई, कहती मैंने नहीं आना. शर्म आ गई उसको. It's a gradual climb, huh? You will breathe heavily. It's not very steep at the same time. And this is when we saw one army jeep. They were very kind. They gave us a bottle of water along with the guidance. 8:30 and this is what we have covered. Road is full of sand. Sometimes very difficult to balance and cross. The confusion. Then we saw a big climb. Our hearts started worrying. एक बड़ा पहाड़ है, उसके पैरेलल निकलेंगे ना, उस पे तो नहीं चढ़ेंगे. उस पे चढ़ेंगे जो सबसे ऊंचा वाला. ये तो हो जाएगा यार, मस्त लग रहा है देखने में. इतना मुश्किल सोचा था उतना नहीं अभी तक हुआ. We stopped one vehicle to ask for the directions and what he told us that changed everything. चिसमले कितना किलोमीटर है? चिसमले 60 है और ऊपर जो उमलिंगला 85 किलोमीटर. 50 है. 60 से ज़्यादा उमलिंगला. ये पहाड़ चढ़ना है अभी ऊपर, उसके बाद फिर नीचे उतरना, फिर वो पक्का सड़क आ जाएगा.
पक्का सड़क आएगा ना, लेफ्ट साइड में जाएंगे, फिर चिसुमले आ जाएगा। चिसुमले तो मेरे ख्याल 1 घंटे में आ जाएगा। 60 किलोमीटर बता रहा है, नहीं आएगा। 60 किलोमीटर बोला उसने। यहाँ से 25 होगा। चलो मेन रोड 25। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू। 50 to 60 kilometer to Chismule. Wait, what? Seems like our plan was getting destroyed. अब पहुंचे सही जगह पे। 21.5। सच में ये तो बस वहाँ तक है जो पहाड़ के ऊपर रोड जा रही है। तो नीचे उतर के पक्का आ जाएगा। लास्ट में खेल आएगा। हाँ बस उसके बाद पक्का मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ ना 10 किलोमीटर तक पीछे कोई है, ना 10 किलोमीटर तक आगे कोई है। और लेफ्ट राइट भी देख लो एक बार। लेफ्ट राइट सिर्फ पहाड़ है। आदमी को जाए तो जाएगा, कुछ नहीं बचा। आज तो टेंट भी नहीं है, हाँ, स्लीपिंग बैग भी नहीं है। ग्रेट यार, लेट्स डू इट। अच्छा है वो क्लाइंब, मस्त लग रहा है देखने में। We continued. This is the second milestone written Jursar. Really don't know what it is and why they have put in. We thought this climb will take us to Nurbula top. बीच में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है। पहले मोड़ में पता चल जाएगा कौन सा अच्छा है। ओके ओके। हाँ रुकते हैं यार। All of them have taken a shortcut. We'll go by the normal road and then we will share the feedback कि कौन सा better option है। बाकी दोनों doable है। You can decide whatever you want. This was the second loop. A smart tip: always take the road. Don't climb straight. Trust me on this. Riding here is very tough. I need to walk. Not easy. This kind of a road was difficult. Very very difficult. So when you have to climb on the top, don't take these straight going shortcuts. These are only good for coming downhill. When you have to climb, always prefer to take the road. My friends are there. I took the road. There are many options to climb. Choose any one. You will face equal difficulty. खत्म हो गया। एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही। क्या? अभी तक कोई गाड़ी, हाँ कोई बाइकर ना उधर से ना इधर से। वो निकलेंगे लेट, इसलिए कोई नहीं, हम जल्दी आ गए। अभी तो 10 भी नहीं बजे। थोड़ी देर में देखना रेला पेला आएगा। We are about to reach to the top. Views are changing slowly, slowly. We can see the mountain peaks now. This is the top. How beautiful the views are. I've never seen such colors. These all have all the yellow shades. Those have the brown shades and black. And it looks so good. We were happy. We thought we have reached Nurbula top. Since this is the top. But then biggest shock came. Nishant realized we had taken a wrong route. My heart sank. I did not want to believe it. We checked properly. Yes, Nurbula top was still very far away. क्या हुआ? क्या बोल रहे थे? कुछ नहीं बोल रहा। पंगा ही ले लिया है। बीवी बच्चा क्या सोचेंगे? साइकिल रखे आराम से बैठ जाओ। कितना एल्टीट्यूड है? 4840। अभी तो हमें 6000 जाना है, फिर नीचे फिर ऊपर। So me and Nishant, we are hiding this information from Tushar and Sandeep because they will get panic if they come to know that we are far away from Nurbula top. Finding happiness. But you know what? I was actually happy. I had always dreamed of riding in such a places, huge mountains, rough paths, complete silence. And we are going on this route, which is really, really beautiful. So don't consider this first top as a Nurbula top, as we did. So that will be a mistake. It's really far from here. The views you can enjoy around. Sometimes wrong path gives you the most beautiful experience. So all down till now, no need to pedal. It's fun to ride, but road is not very smooth, it's bumpy, so you may feel pain after a ride of some time. Can you see the views around? So beautiful. ये मैचुत किसका आइडिया था यहाँ पे आने का? पता नहीं, कोई तो है जो ऑरेंज कलर की और वो पहनता है रेड हेलमेट के साथ।
देखो अच्छा बता दो सही है या गलत। अरे आओ तो यहीं पे कबर खुदेगी या मैं आगे चलूंगा? हम सही जा रहे हैं, चलते जाओ। देखो 2 रूट हैं, रूट 2 एंड रूट 3। रूट 2 चढ़ता है निर्मला टॉप पे, रूट 3 है जो निर्मला टॉप से भी आगे निकलेगा सीधा चश्मुल की तरफ, लेकिन वो कहाँ से अलग होते हैं रूट वो पता नहीं। यहाँ खड़े होके मत सोचो ये सब। सिविलाइजेशन नहीं है, ऐसा लगता है चांद पे प्लॉट ले लो। सो बम्पी यार, सब कुछ हिला दिया इस रोड ने। On this bumpy road, riding with one hand, holding camera in another, very challenging. But views are amazing, huh? You will love it. See, this is a full adventure and thrill. Oh, there is a animal. Let's go and catch. Is that another donkey? Yeah, they are very small in size. That's a donkey again. क्या हुआ, किस लिए रुक गए? किसकी लाश? जूते कपड़े सब जले पड़े। अच्छा, मेरे को लगा कोई फंस एक दूसरा डंकी दिखा ना हमें रूट पे, डंकी नजर आ रहे हैं बस, वो भी वाइल्ड छोटे से। गया। 4 गधे हम भी तो हैं। बेटर यू कैन कॉल योरसेल्फ समथिंग एल्स। गधा ही होगा कोई। ओकडू मिले की तरफ जा रहे हैं, की तरफ ले जाएंगे। एक्सेलेंट, गुड न्यूज़। जा रहे हैं निर्मला टॉप से आगे निकल रहे हैं। कुछ भी कर लेना, मैं निर्मला टॉप नहीं चढ़ूंगा। ऐसे बोल रहे से वो फिल्म थी ना, मैं पंजाब नहीं जाऊंगी, मैं निर्मला टॉप नहीं चढ़ूंगी। जो भी है वो निर्मला। भाई साहब पिछले 3 घंटे से कोई बंदा नहीं मिला है जो ये बता दे कि गधों कहाँ घूम रहे हो। नहीं तो हमें वो 2 लोग मिले थे जिससे हमने रास्ता पूछा था। कौन 2 लोग? एक तो वो पिकअप वाला था, एक आर्मी वाले थे, दोनों ने सही 60 बताया। किलोमीटर बोला था ना, तो मुझे डाउट तो पहले हुआ था कि या तो ये पागल है या हम पागल है, कुछ तो गड़बड़ है। 60 किलोमीटर होगा फिर, वो क्या इसका तो मिनिमम टारगेट रखोगे ना। कब एक तो ना मैं इस जो बजरी से परेशान हो रही थी, 2.5 हाथ लगाने पड़ते हैं। और ये भाई देखियो जेम्स बॉन्ड, एक हाथ से चला रहा है, एक हाथ से वीडियो बना रहा है, या दोनों में काबू नहीं आ रही। साड़ी कभी उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। यही होता है ना सीजन ट्रैवलर साइकिलिस्ट, पता है उसको सब आता है। यार कोई तो आ जाओ यार, अभी आया तो था। मेरा दिल ये पुकारे आजा। टाइम आई एम मिसिंग माय वाइफ वाइफ एंड किड्स। कहाँ है वो दोनों? दिल के जाते हैं तो इसलिए करना चाहिए, सहारे मुझे लग रहा है हम थोड़े सॉलिड स्किट मारी मेरी साइकिल ने, ये देखो। I was holding camera in one, riding with one, and then I had to push the brake. Fast! Skit मारो 1-2. Yeah! These row paths, I have seen it in the movies or different cyclists when they were doing it. But doing it, experiencing it first time is really amazing experience. The only problem is we don't have the water source in this area. Yo! Very nice! Yay! We saw a car, we got some information, but really that hit us hard. ये रास्ता मालूम है पहले आपको? रास्ता ब्रो हमको साफ मालूम है। तो ये सही रास्ता है ना उमलिंगला? नुरबुला पास यही होगा। एक्सीलेंट है। अच्छा कित्थों तुसी? चंडीगढ़। So 31.5 kilometer after that you will connect to this road. So Demchok, Umlingla and Jorsar. We made it. We still had to climb to Nurbula top. It was going to be like moving a mountain. 31. That is the destination.